फिल्टरिंग एंड सॉर्टिंग आर दो ऐसे कॉन्सेप्ट्स होते हैं विच जो भी हम डैशबोर्ड्स बनाते हैं या चार्ट्स बनाते हैं, इवन लेट्स से हम रिपोर्ट्स भी कोई बनाते हैं सिंपल इन एक्सेल और एसक्यूएल कहीं पर भी, obviously we have to give the end user the option to filter the data, and then हम अपने डेटा को हमेशा sorted रखते हैं. मीनिंग व्हेन आई से sorted, primarily in a sequence. So today we will understand how can we apply filtering and sorting in tab. ठीक है. So wherein filtering is basically कि जहाँ पे from a whole set of data we primarily focus on a subset of data as per our requirement, and sorting is something जहाँ पे we get our data in a particular sequence. It can be ascending descending order with respect to your character values or to your numeric values. ठीक है. So अभी के लिए what I will do, I will quickly take simple chart जहाँ पे I will take the subcategory and also I take the, let's say, sales. So अभी क्या हो रहा है, obviously now as we understand this superstore का data, so इस superstore data में eventually there are 17 subcategories. ठीक है. And for each of those subcategories, since we have taken the sales value, so these bars describe the what is the sales value. Now let's say someone, obviously it happens in the organization कि क्या होगा ना, for each of these categories ना or subcategories there are different category owners. So एक category owner होता है who takes care of the accessories category, someone takes care of the appliances and so on, someone takes care of the copiers and all that. अब we want to give end user an option कि वो जिस particular subcategory को देखना चाहे उसी का report या view देख सके. He doesn't want to see a complete picture of the other subcategories जहाँ पर वो इसका वो primarily owner नहीं है, because for him or her those subcategories are of no value. So primarily he just wants to focus onto the subcategories which he or she is owning. ठीक है. उसके लिए अब क्या करना पड़ेगा, वेरी सिंपल. अभी क्या हो रहा है कि यहाँ पर तो ओवरऑल सब कैटेगरीज का वी आर गेटिंग द सेल्स वैल्यू, बट सिंस वी वांट टू गिव एंड यूजर्स एन ऑप्शन विद रिस्पेक्ट टू अप्लाई फिल्टर्स ऑन सब कैटेगरीज. सो वेरी सिंपल, जब भी आपको किसी भी को, लेट्स सपोज किसी भी डायमेंशन को वी हैव टू ऐड ऑन टू द फिल्टर्स, what you will have to do, simply take that particular dimension and add it onto the filter shelf. ठीक है. So this particular area, as I mentioned in the earlier session, this is called filter shelf. So हम क्या करेंगे, since we have to apply filter on subcategory, so हम subcategory को लेंगे और उसको यहाँ पे filter shelf पे डाल देंगे. The moment you drag any of the fields, ठीक है, onto the filter shelf, ये वाला window एक open हो जाता है. ठीक है. So this is primarily a filter menu window, you can say it. कि जहाँ पर अब हम यहाँ पर जो भी फिल्टरिंग अप्लाई करना चाहें वी कैन अप्लाई इट, एंड अकॉर्डिंगली द ग्राफ विल गेट चेंज हियर और अपडेटेड. अभी क्या है, बाय डिफॉल्ट एज यू सी यहाँ पे सारी की सारी सब कैटेगरीज सिलेक्टेड है. ठीक है. एज पर आवर रिक्वायरमेंट वी कैन सेलेक्ट दोज विच वी वांट टू फोकस. ठीक है. अब इवेंचुअली अगर हम वी वांट टू फोकस ऑन ऑल, इट्स ओके टू हैव ऑल, और अगर हमें लेट्स सपोज कुछ कस्टमाइज करना है, सो दैट कस्टमाइजेशन वी कैन डू. ठीक है ना. अब यहाँ पर क्या है, इन विद रेस्पेक्ट टू फिल्टरिंग इन टैबलू, सो टैबलू गिव्स अस 4 फिल्टरिंग ऑप्शंस. ठीक है. सो व्हिच यू सी हियर एज अ मेन्यू ऑप्शन. पहला होता है एक जनरल, देन कम्स योर वाइल्ड कार्ड, थर्ड इज योर कंडीशन एंड फोर्थ इज योर टॉप. सो इन चारों menus के accordingly we can obviously by using these different menus we can go ahead and filter our data. So primarily we can filter the subset of data on which we want to focus. Guys always remember, तो चलो ये तो ये 4 मेन्यू हो गए. अब यहाँ पर चूंकि अपन जनरल पर है, सो इट्स शोइंग अस ऑल द सब कैटेगरीज, एंड देन दिस इज समथिंग, ये जो समरी वाला विंडो है ना, सो इट प्राइमरली डिस्क्राइब्स कि हमने हर एक मेन्यू पे कौन कौन से अलग अलग फिल्टर ऑप्शंस अप्लाई कर रखे हैं. जैसे कि सिलेक्शन इज, दिस इज ऑब्वियसली फॉर जनरल ऑप्शन के लिए. वाइल्ड कार्ड के अगर आप वाइल्ड कार्ड पे कुछ लगाओगे सो इट विल शोकेस हियर, कंडीशन पे कुछ लगाओगे इट विल शोकेस हियर, लिमिट पे कुछ लगाओगे इट विल शोकेस हियर. सो यहाँ पे समरी पे क्या मिलता है, सो सिंपल अ क्विक व्यू ऑफ व्हाट ऑल फिल्टर्स वी हैव अप्लाइड. ठीक है. अब ऑलवेज रिमेंबर दीज 4, ये जो डिफरेंट मेन्यूज है ना, सो दीज ऑल आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर. सो मीनिंग ऐसा नहीं होगा कि अगर हम जनरल पे कुछ फिल्टर लगाएंगे और फिर हम वाइल्ड कार्ड पे लगाएंगे, तो इट्स नॉट द केस कि जनरल वाला फिल्टर ओवरराइड हो जाएगा और वाइल्ड कार्ड वाला फिल्टर अप्लाई होगा. and then same for others as well. So each of these menus are given the same weightage.
तो मीनिंग अगर आप इस पे भी कुछ फिल्टर लगाते हो, उस पे भी जाके कुछ फिल्टर अप्लाई करते हो, उस पे भी कुछ फिल्टर अप्लाई करते हो, उस पे भी फिल्टर, इन चारों के बाद जो वैल्यूज बचेंगी दैट विल गेट शोकेस्ड हियर। इट्स नॉट दैट कि अगर हम इस पे फिल्टर लगाएंगे और इस पे कुछ फिल्टर लगाएंगे तो टॉप वाला जो फिल्टर होगा सो दैट विल बी गिवन प्रायोरिटी एज कम्पेयर टू जनरल। ठीक है, सो ईच ऑफ दिस मेन्यूज आर गिवन द सेम वेटेज। अब क्विकली लेट्स से अब फ्रॉम ऑल दी सब कैटेगरीज आई सिंपली सेलेक्ट नन and then we select, or let's suppose select all, and I simply remove copiers and furnishing. ठीक है, so now you see your selection says selected 15 of 17 values because subcategory में overall 17 values है. Since we have removed this copiers and furnishings from, let's suppose from the filter option, so that is the reason it is saying selected 15 of 17 values. Now moment we say apply, so यहाँ पर देखो, now if you count this bars will be only 15 and you will not get the data for copiers and furnishings category. The same way you can obviously go ahead and apply filters across the subcategories which you want, or you can exclude them. अब Tableau also gives you an option कि let's suppose अभी क्या होगा ना कि अभी हमें ये दो नहीं चाहिए थे, बाकी 15 चाहिए थे. Let's suppose the vice versa case wherein हमें बस ये दो चाहिए, copiers and furnishings, and we do not need other 15. So I simply want to see the data for copiers and furnishings and not for the other subcategories. So one way of doing is obviously you select none and then you select copiers and furnishings. Another way of doing is you select all. Different ways है, as per your convenience you can do anything, and then you select copiers and furnishings को ऊपर से tick mark हटा दो, and then you check box this one exclude. Exclude का मतलब क्या होगा कि primarily हमने जो select किया हुआ ना वो सारे exclude हो जाएंगे. So till the time this check box is not tick mark, अभी obviously simple है कि ये सारे included है. लेकिन अगर हम exclude पे कर देंगे तो इसका मतलब हम ये बोल रहे हैं कि जितने सारे tick mark हैं इनको तुम exclude कर दो. So now if I go and say apply, now we will get only data for those subcategories जिसको हमने यहाँ से tick mark नहीं किया हुआ है, because बाकी सारे जो है वो exclude हो गए. And eventually Tableau also says excluded 15 of your 17 values. Or what you can do, another thing is you can select none and then you select copiers and furnishings. So these are the multiple ways of doing the same task as per our convenience. ये clear है? अभी तक कोई question? नहीं सर, समझ आ गया. ठीक है. Now comes, okay, so now quickly select, let me select all and simply remove the copiers and furnishings. So we are now getting the view for the 15 subcategories. Now wildcard. Wildcard is something obviously, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमने क्या किया, copiers को and furnishings को हटा दिया है. Now simply I go to wildcard and wildcard is like a text मतलब filtering. Obviously you say you want to filter something which starts with C. ठीक है. So now if we go here, general में अगर हम देखें तो we have only two subcategories which starts with C, which is chairs and copiers, and then we have removed copiers from general वाला. लेकिन हम wild card में बोल रहे हैं कि I want values for something which starts with C. So now if I go and say apply, so we are only getting data for chairs. ठीक है, we are not getting data for other categories because obviously other subcategories do not start with letter C. And then एक और चीज जो मैं आपको पहले ही बताया कि यहाँ पर इट्स नॉट दैट यहाँ पर अगर मैंने स्टार्ट से सी किया तो यहाँ पे कॉपियर्स विल गेट इंक्लूडेड. नो, बिकॉज कॉपियर्स को हमने यहाँ पे एक्सक्लूड कर दिया था इन सिलेक्शन वाले ऑप्शन पे. सो कॉपियर विल स्टिल बी इनएक्टिवेटेड, इनएक्टिव मोड ओनली, एंड देन दे ओनली सिंस वी हैव अप्लाइड वन मोर लेवल ऑफ फिल्टर विच इज स्टार्ट विद सी. अब हमारे ये दोनों कंडीशन को जो फुलफिल कर रहा है, सो दैट इज ओनली आवर चेयर्स वाला सब कैटेगरी. दैट इज द रीजन वी आर ओनली गेटिंग डेटा फॉर चेयर सब कैटेगरी, नॉट फॉर दी अदर्स. ठीक है. सो दिस इज हाउ वाइल्ड कार्ड वर्क्स. कूल. अब ऑन टू द कंडीशन इफ आई कम, सो ऑब्वियसली यहाँ पर अगर हम प्राइमरली वी से कि आई वांट दो सब कैटेगरीज वेयर द sales value sum of, we are showcasing here sum of sales value. Okay, so let me go here, say apply and say apply. None, we say apply. Okay, so अभी हमारे पास ठीक है. So since I remove the filter from the wildcard, so we are getting data for all those 15 subcategories जो हमने यहाँ पे select किया हुआ है general वाले selection वाले. Now condition में I say we just want to have those subcategories जिनकी हमारी sales value is obviously you can select these operators equals to, less than, equals to, greater than, equals to, this is not equals to. ठीक है.
So we say, let's say हम कहते हैं कि I want values for those subcategories where my sales value is something which is greater than 200k. ठीक है, so I simply say 200k. ठीक है, and you say apply. So eventually you will get now only data for those subcategories जहाँ पर आपकी जो sales value है, sum of sales value is greater than your 200k. So obviously of all those 17 subcategories, there are 5 subcategories which are having the sales value of greater than 200k. And eventually, if we go to general, go to summary, so yes, here it's saying selected 15 of 17, and in the condition we have applied this condition, जो कि यहाँ पे showcase हो रहा है. So this primarily, as I mentioned, quickly gives a view of what all filters we have applied across different menus. ठीक है. Then also one good thing in Tableau, यहाँ पर you can apply filters with a range of values. अब eventually अब क्या होता है ना, first time when you come over this window, it obviously shows minimum and maximum values as blank. ठीक है. So now quickly let me show to you. अभी क्या होगा कि यहाँ पर देखो minimum maximum values आपको blank दिख रही है, but eventually if you want to let Tableau know what is the minimum value, what is the maximum value with respect to what data we have selected, the dimensions and measures, you simply click. Obviously you can see from here itself, right? The minimum value something around 3k है, maximum value something around 330k. Or what you can do, अगर आप यहाँ पे values को display कराना चाहते हो for your reference, you simply click on load. ठीक है. So once you click on load, Tableau will give you what is the minimum value, what is the maximum value, and then accordingly you can obviously use them, or you can have a criteria while applying the filters. Okay, so this is what it is, the condition. Now top. So top में क्या है कि eventually अगर हम चाहते हैं कि of all those subcategories, I need those subcategories data which falls into top 5 subcategories by sales. So primarily वो सब 5 subcategories जिनकी sales value सबसे ज़्यादा है. So I simply want to have those subcategories information in this particular view. Obviously what you can do, you say top, and eventually यहाँ पे top 10 की जगह you say top 5 by sum of sales. ठीक है, no other condition, and you say apply. तो eventually अब जो सबसे वो 5 categories जिनकी sales value सबसे ज़्यादा है, so those will get appeared here. And if this case is opposite, कि we want these, let's suppose those subcategories where the sales value is the least, so from bottom we want the 5 subcategories with respect to sales value. Obviously you can do that as well. As we can only have top values, we can have bottom 5 values also. You select apply and okay. So obviously now you are getting a view of those subcategories which is having the least sales, ठीक है, of all those 17 subcategories. अब eventually अगर हम general पे जाएंगे, so you will get to see that you have applied these two filters at both these places. ठीक है guys. So these are the obviously the ways, 4 ways by means of which as per our requirement. अब ऐसा कुछ book rule नहीं है. As per the requirement we choose कि हमें कब कौन सा option use करना है. But these are the 4 ways by means of which we can obviously apply filters at the sheet level in Tableau. ठीक है. Then eventually एक और चीज है, अब आपने मान लो filter apply किया है. Now you want to, दो चीजें होंगी. At times you would want to edit your filter. Very simple, you go and click on edit filter and then obviously window open हो जाएगा and you can edit it. And then let's suppose आपने जो भी filters apply किए हैं, now you want to remove all those filters. ठीक है. So obviously one way is edit filter पे जाके सब जगह all करोगे, यहाँ पर कुछ apply किया हुआ तो उसको हटाओगे. Or instead of that, what you can do, you simply go here and then you say clear filters. So the moment you say clear filters, as simple as that, वो जो आपका dimension added at the filter cell, it will get removed and view will get back to the default position or the default shape. You will take the default shape. So this is all with respect to filtering or how to apply filters in Tableau at the sheet level. Okay. Now the next thing is our sorting. How can we apply sorting? This is something which is very easy. So let me quickly take. I take the product name. These are the products. So these are the different product names. So quickly देखो, अभी हमें पता चल गया कि of all the with respect to the data, there are some 1850 products जहाँ जिसके
परचेजिंग हुई है, ठीक है, which are being bought from the super store. 1850 products, unique products are there, and then I apply the sales onto the rows. ठीक, अब ये है कि there are some 1850 products, and then eventually Tableau is letting us know उनका sales value क्या है. So now eventually this is not giving a good view with respect to look and feel. So eventually if someone wants to, will obviously want to either sort it in the ascending order or sort it in the descending order. So very simple how to sort it. So there are two ways of sorting your data. Either you go to your आपका जो भी मेजर है, obviously you will always sort it as per your measure कि हमें इसको सबसे बड़े, सबसे ज्यादा जहाँ पे सेल्स है वो सबसे पहले आए और सबसे कम जहाँ पे सेल्स हुई है वो सबसे पहले आए. You simply click on this axis. ये जो आपको छोटा सा ऑप्शन दिख रहा है ना, यहाँ पे 3 bars दिख रहे हैं, so these bars describe the default shape. You once click on it, it will get your data got sorted in descending order. ठीक है, so obviously अगर आप देखोगे, now your data is being sorted in the descending order. Again you click on it, your data will get sorted in the ascending order. ठीक है, once again you click on it, your data will get back to your default position. ठीक है, and you see how things are changing. जब भी always छोटी छोटी चीजें हैं जिससे हमें ना it quickly helps us to understand the chart or the views which have been created. जब आपका डेटा सॉर्टेड नहीं होगा ना, so you see यहाँ पर आपको कोई भी लाइंस नहीं दिख रहे, ना ही प्रोडक्ट नेम पे ना ही सेल्स पे. Now you see the change. The moment I click on this one, data got sorted. So actually यहाँ पर तो बड़ा से छोटा की तरफ जा ही रहा है, the big bar, small and then smaller bar, and then actually here also you get to see these 3 lines got added product name के right hand side पे. So these describes कि हमारा जो डेटा है वो sorted है in descending order. Again you click on it, so now you see छोटे से बड़े की तरफ ये lines आ गए, सबसे छोटा वाला then बड़ा and then bigger one. So this primarily describes your now our data is sorted in ascending order. Once again we click on it, the lines are gone and then obviously the data is not sorted, it's just in its original format. ठीक है, so this is one way of sorting it with respect to using your axis. Okay, so these are obviously my x-axis, this is my y-axis, so you can simply use this option to sort your data. Another way to sort your data is by you can quickly use these icons. ठीक है, ये तो ये swap वाला होता है, you simply click on swap, तो क्या हो गया आपके columns पे अब आपके sales आ गई and then your rows पे आपके product names आ गए. ठीक है, then we can sort our data by using these two icons as well. So this one obviously says sort in ascending order and this one says sort in descending order. And just for our understanding, if you see these lines, these bars, छोटे से बड़े की तरफ है, these are from बड़े से छोटे की तरफ. You simply click on it, your data will get sorted in the ascending order. So सबसे छोटा वाला product having the least sales is coming at the first position and then followed by the others. You simply click on this one, your data will get sorted in the descending order. So these are the two ways by means of which we can sort our data. ठीक है, I hope this is clear. Now, sorting. ठीक है, अभी एक और सॉर्टिंग का एग्जांपल करेंगे. सो गाइस अभी मुझे क्या चाहिए ना, वेरी सिंपल आस्क wherein आप now you guys need to help me. I want to showcase the profit value, sorry, the sales value by year on a yearly basis, or let's suppose let's take it very simple on an okay. So what I want to showcase, so यहाँ पर मेरा सब कैटेगरीज आए, ठीक है, in a row horizontally, and then I have the sales value. So primarily describe across different subcategories what is the sales value, and I want to give it a graphical format, not a tabular format. ठीक है, so simple है. We want to showcase the sales value by subcategory, and the subcategory should come in horizontal manner. So हम कौन से field को कहाँ पे रखेंगे to create this layout? I hope the problem statement is clear, right? सवाल में इतने चुप क्यों रहता है? जब मैं कुछ पूछता हूँ तब तो कुछ बोला करो. मैंने कोई भी आज इतना सॉरी. हाँ तो you need to tell me, right guys? Simple है. What I'm telling, I need to create a view. ठीक है, we need to create a view wherein we will showcase the sales value by subcategory, and then the subcategory should come or should be displayed horizontally followed by the sales value, and this needs to be created in a graphical format, not in a tabular format. मतलब हमें एक ग्राफ क्रिएट करना है जहाँ पे सब कैटेगरीज हमारी हॉरिजॉन्टली आए फॉलोड बाय द सेल्स वैल्यू एज पर दी बार्स. मैंने आंसर भी बोल दिया. कैसे बनाएंगे इसको, किस फील्ड को कहाँ पे यूज करेंगे? सो दिस माइट मस्ट बी क्लियर टू यू.
we would be using two fields only, which is my subcategory and the sales, right? अब इस व्यू को क्रिएट करने के लिए हम कौन से फील्ड को कहाँ पे ड्रैग करेंगे? सर सब कैटेगरी को कॉलम्स पे रखेंगे ओके, एंड सेल्स को रोज में. ठीक है. और कुछ एनीवन वांट्स टू मेक अ चेंज टू इट, और कुछ, और एनी अदर आइडिया? ठीक है, तो सैसा गुड ट्राई. सो सिंस आई सेड दैट वी नीड सब कैटेगरी हॉरिजॉन्टली, राइट? अभी क्या हो रहा है, इट्स कमिंग वर्टिकली, राइट? सो सिंस अब आप कभी भी व्हेनेवर वी ऐड सर एनीथिंग, उसको चेंज कर देंगे ना, रिवर्स कर देंगे, स्वैप कर देंगे. हाँ करेक्ट, वी कैन डू दैट. बट सिंस आई मेंशन्ड एट द वेरी फर्स्ट इंस्टेंस ना कि वी नीड इट इन द मतलब हॉरिजॉन्टली, so always remember whenever we need anything horizontally we will have to place it in rows only. ठीक है, eventually yeah, we can do this कि अपन जाके इसको स्वैप कर देंगे, so it will take this position, but then क्यों ना हमको उसको पहले इंस्टेंस में ऐसे करें. ठीक है, ओके. अभी क्या है, so now we have the subcategory and now we have the sales value. ठीक, so obviously, so this from the data we can see the chairs is having the maximum sale and this subcategory fasteners is having the minimum sales. अब क्या है, so now let me, instead of the sales value, let me take the profit. ठीक है, so obviously here we are showcasing by subcategory what is the profit, wherein obviously three subcategories पे we are getting negative profits, and then there are obviously some 14 remaining subcategories जहाँ पे profit positive है from obviously 950 to 55K. अब हमें क्या बोला गया है guys? Now business wants to have a view जहाँ पे they only want to see the profit value across subcategories, but ये जो हमारा view हो ना, this needs to be sorted by sales value. Eventually they do not want to कि यहाँ पे हमारा sales भी display हो. Had it been the case कि हमें sales भी यहाँ पे display करना होता, would have gone ahead and then just for your information अपने ने पहले भी क्या यहाँ पे sales को add कर देते. So primarily ये window हमें showcase कर रहा है, as you can see profit across different subcategories, and this window is showcasing us the sales value. ठीक है, but what they want, they only want to see the profit by subcategory, but they want to, ये जो हमारा जो ग्राफ ये बार्स है ना, so this should be sorted basis the sales value. So primarily जहाँ पे sales value जिस सब कैटेगरी की सबसे ज्यादा है वो सबसे पहले आए, followed by the others. ठीक है, so meaning वो क्या करना चाह रहे हैं guys, they want to see, their expectation is कि जिस सब कैटेगरी की सेल्स ज्यादा है उसका प्रॉफिट भी ज्यादा होना चाहिए. But is it the case or not? Is this clear? इसलिए वो चाहते हैं कि नाउ लेट्स से अगर मैं सेल्स को यहाँ पर ऐड कर दूं, सो देयर आइडियल एक्सपेक्टेशन इज कि जहाँ पे जिस सब कैटेगरी की सेल्स ज्यादा है उसकी प्रॉफिट भी ज्यादा होगी. सो दैट इज द रीजन दे वांट अस कि हम जो इनको व्यूज शेयर करें, सो दिस व्यू शुड बी एट द एंड, इट शुड बी सॉर्टेड बाय द सेल्स वैल्यू, नॉट बाय द प्रॉफिट, नॉट बाय द सब कैटेगरी. ठीक है, अभी ये जब व्यू टेम्पल के आएगा ना, देन यू विल बेटर अंडरस्टैंड इट. इवेंचुअली द प्रॉब्लम स्टेटमेंट है कि हमें इसको सॉर्ट करना है एक पर्टिकुलर वेरिएबल से, जिस वेरिएबल को हम ना तो कॉलम्स पे, ना ही रोज पे, ना ही कहीं पर भी यूज नहीं कर रहे हैं. ठीक है, सो मीनिंग हम उसको अपने ग्राफ में या चार्ट में कहीं भी यूज नहीं कर रहे, बट देन वी हैव टू सॉर्ट इट दिस पर्टिकुलर चार्ट बाय a measure which is not available. This is available in my data, but this is not available at the level of, let's suppose, details we are using in our chart. तो वो चीज कैसे करेंगे? वेरी सिंपल, एट एनी टाइम मोमेंट ऑफ टाइम अगर हमको एक पर्टिकुलर फील्ड से सॉर्ट करना हो, दैट फील्ड ऑब्वियसली नीड्स टू बी अ पार्ट ऑफ आवर डेटा, बट दैट फील्ड इज नॉट अ पार्ट ऑफ आवर चार्ट और ग्राफ. उसके लिए व्हाट वी विल हैव टू डू, यू सिंपली गो टू दिस पर्टिकुलर जो भी हमारा डायमेंशन है, देन हियर यू विल गेट एन ऑप्शन विच से सॉर्ट. अब सॉर्ट पे क्लिक करो. ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, टैब्लू बाय डिफॉल्ट सॉर्टेड बाय डेटा सोर्स ऑर्डर. सो हियर यू विल सेलेक्ट एन ऑप्शन विच सेज फील्ड. दिस इज मोस्टली यूज. ठीक है, now we want to sort it in descending order, क्योंकि वो बोला गया descending sales में करना है, and you give the field name. So the moment you click here, Tableau will give you all the fields which are a part of your data. ठीक है, and then you simply type in sales here. ठीक है, so अब ये क्या हो रहा है, so it is saying sort by field in the descending order of sales value and sum of sales obviously, and you say okay. So अब ये देखो, so अब क्या हो रहा है कि phones is something जहां पर हमारा जो प्रॉफिट है विच इज 44K, बट देन कॉपियर्स इज समथिंग विच इज प्रॉफिट इज कमिंग 55K. अगर हमने इसको गाइस, अगर समझ में नहीं आया ना, पूछ लेना. ठीक है, लेट मी फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू मेक यू गाइस अंडरस्टैंड.
अगर हम इसको सॉर्ट करते बाय प्रॉफिट ना, तो ऑब्वियसली कॉपियर्स वाला सबसे पहले आता है, फॉलोड बाय द अदर्स। लेकिन अभी हमें क्या पता चल रहा है फ्रॉम दिस व्यू कि ऑल दो फोन्स कैटेगरी इज हैविंग द मैक्सिमम सेल्स, ठीक है, बट द प्रॉफिट इज 44K विच इज लेस देन द अदर सब कैटेगरी विच इज माई कॉपियर्स। इसका रीजन क्या हो सकता है, इससे बिजनेस रीजन क्या ड्राइव कर दी है कि आइदर या तो वहां पे मार्जिन कम रहा होगा या फिर इन्होंने डिस्काउंट परसेंटेज ज्यादा दिए होंगे। So now they will deep dive into their data and then make some changes or take some strategic decisions. हम इसको और अच्छे से समझते हैं। Now let me quickly add the sales value. Obviously अगर आप देख रहे हो अभी ये जो बार्स हैं, so these are not in sequence. Eventually अगर आप ये देखो tables category is a subcategory which with respect to sales it is coming at the 4th position, क्योंकि हमने sort किया हुआ है by sales, लेकिन इसका profit जो है बिल्कुल ही नेगेटिव है। So अगर हम इसको अगर हम सिंपली इसको अंडरस्टैंड करें ना, now let me add the sales value. So now you see your bars are in a sequence, right? So इससे पता चल रहा है कि obviously अब हमने चूंकि सेल्स से सॉर्ट किया हुआ है, so now you see the comparison. While the phone subcategory is having the maximum sales, but it's not the case that phone subcategory is having the maximum profit. Copiers is having the maximum profit, which eventually जहाँ पर जो sales है, which is almost half of the phones. So इससे बिजनेस क्या ड्राइव डिसीजन करेगी कि या तो फोन सब कैटेगरी पे हमने अपना मार्जिन कम रखा था या फिर हमने डिस्काउंट ज्यादा दिया, ठीक है। So now they will obviously now deep dive into their business and take some strategic decisions. Okay. Now if you see table subcategory which is having a sales value of something around 206K, a very high number of sales value, right? 4th position. लेकिन with respect to the profit, it's coming as minus 17K. मतलब यहाँ पे तो जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है, ठीक है। या तो हमारे रिटेलर डिस्ट्रीब्यूटर ने कुछ गड़बड़ किया या फिर हमने ही कुछ कॉस्ट सेटअप या मार्जिन सेटअप या डिस्काउंट सेटअप गलत कर दिया, ठीक है। So this type of views also is possible to create in Tableau. ठीक है, so primarily you can sort your data. It's not a mandate or limitation कि हम जो यहाँ पे let's suppose जो हम data यहाँ पे use करेंगे, we can sort it by those dimensions or measures only as per the special requirement, क्योंकि business को sales नहीं चाहिए, ठीक है। They just wanted to have the profit and across the subcategories, but then sorted by the sales value. तो हमने ऐसे जाके यहाँ पे you simply go and sort it by using an option which is called field. I hope guys this is clear, right? So this is how data analytics works, and this is how we create some special requirements or reports as per the ask from our end user or the client. Yes, sir. कोई क्वेश्चन किसी को ऑन फिल्टर्स एंड सॉर्ट? कुछ कह रहा था क्या मुझे? हाँ हेलो, शिल्पा बात करें। एक्चुअली इसके पहले अब सॉर्टिंग पे मींस लाइक ऊपर मींस असेंडिंग डिसेंडिंग 3 यहाँ पे 3 डॉट्स है ना, वहाँ पे क्लिक किया तो नो नो नॉट देयर, नियर द ग्राफ नियर द प्रॉफिट एंड सेल, करेक्ट। एक छोटा सा 3 डॉट्स है ना असेंडिंग डिसेंडिंग इसके पहले सॉर्टिंग पे, तो व्हाई वी कैन नॉट यूज इन दिस शीट। आप सब कैटेगरी के पास सॉर्ट पे जाके आप असेंडिंग डिसेंडिंग आप सेलेक्ट किया था, करेक्ट। हाँ ये शीट पे आप वो सेलेक्ट क्यों नहीं, मींस लाइक जस्ट यहाँ पे क्योंकि हाँ वही मैंने बताया, वेयर दिस शीट, हाँ यहाँ पे लेफ्ट साइड सेल्स के ऊपर 3 डॉट्स है ना, 40 वहाँ पे, हाँ ऐसे ही अनदर शीट पे भी है ना वहाँ पे। हाँ so वही मैं बता रहा था ना, here you can sort it, this option you will use it अगर आपको सॉर्ट करना होता है बाय सब कैटेगरी और बाय प्रॉफिट, ठीक है ना। बट यहाँ पर वो केस नहीं था, वी हैव टू सॉर्ट इट बाय अ फील्ड व्हिच वी आर नॉट यूजिंग हियर, राइट। सो इसलिए बाय डिफॉल्ट अगर हम यहाँ पे जाएंगे ना सॉर्ट पे ना, इफ यू हैव टू सॉर्ट इट बाय अ डेटा सोर्स, so data source primarily Tableau understands either by subcategory or the profit, लेकिन हमें यहाँ पे सॉर्ट करना था by a field which is not available or which we are not going to use in this view, ठीक है ना। इसलिए हमें यहाँ पे जाके by field select करके and then I chose the field, ठीक है ना। If you have to sort it by the left, let's suppose the fields which we have used in columns or rows or which are a part of your graph, then obviously you can quickly go and use this option or this option. But then if you have to use it by a special field which is not a part of your graph, then you will have to let Tableau know that I need to sort it by a specific field, not by the fields which are a part of my graph. ठीक है? Is it clear?
शिल्पा? Yes, yes, Ashish, yes. Cool. ठीक है guys. Now let me quickly make you understand a heat map. ठीक है, and then we will go on this session. ठीक है. So now obviously मैं जो आपको उसको बता रहा था कि heat map is something. So heat maps, these highlight tables, ठीक है, obviously आपने आगे भी पढ़ेंगे stack bars and all those. So these are some, let's suppose, bars which always comes into picture or play whenever there is a special requirement. अब हीट मैप में क्या होता है, इवेंचुअली इफ आई गो एंड शो टू यू इन हीट मैप्स, सो हीट मैप्स ऑब्वियसली नाउ ऑलवेज गाइस मेक योरसेल्फ फेमिलियर, और आई वुड से मेक द शो मी सेक्शन ऑफ फ्रेंड ऑफ योर्स, ठीक है ना, बिकॉज दिस इज वेरी हेल्पफुल विद रिस्पेक्ट टू लर्निंग आल्सो एंड व्हेन यू विल वर्क ऑन टू द प्रोजेक्ट्स आल्सो, ठीक है. अब यहाँ पर क्या होगा, द बेस्ट थिंग इन टैब्लू व्हिच ऑब्वियसली आई explained to you earlier also कि with respect to each of the chart what is the prerequisite that Tableau lets us know. अब हीट मैप के लिए क्या है टैब्लू का, इट इज सेइंग कि इट्स ओके टू हैव वन और मोर डायमेंशंस. व्हेन इट सेज मोर मतलब वी कैन हैव एन नंबर ऑफ डायमेंशंस टिल द टाइम इट्स ओके टू शोकेस. बट with respect to measures we can have only one or maximum two measures, मतलब दो से ज्यादा मेजर्स हम नहीं यूज कर सकते when we have to create a heat map in tab. अब ऐसा क्यों है, बिकॉज वन मेजर डिस्क्राइब्स और गेट्स डिस्क्राइब्ड बाय योर साइज, मतलब जहाँ पे साइज जितनी बड़ी होगी उसका मतलब है कि लेट्स सपोज हम सेल्स ले रहे हैं तो इसका मतलब है सेल्स वहाँ पे ज्यादा है, और अगर हमारी साइज छोटी है तो हमारा मतलब है कि हमारा सेल्स वैल्यू कम है. एंड वन ऑफ योर मेजर गेट्स डिस्क्राइब्ड बाय योर कलर डेंसिटी. सो प्राइमरली जहाँ पे कलर डेंसिटी ज्यादा है मतलब वहाँ का वो पर्टिकुलर मेजर वैल्यू ज्यादा है, और जहाँ पे कलर डेंसिटी कम है मतलब वहाँ पर उस मेजर वैल्यू की वैल्यू कम है. So this is the region, and heat map में हम यही दो चीज शो कर सकते हैं. Only by these two things, by either by size, one measure gets described by your size, other measure gets described by your color. So that is the reason, primarily reason we can have only maximum two measures. It's okay to have one measure. So one measure लोगे तो either by you can use, up to you, either you can use size वाला option or you can use color वाला option. But then we can't have more than two measures while we are creating a heat map, because again and again I'm repeating the same thing. One measure gets described by your size, another measure gets described by your color. So having said this, now let's quickly create a heat map. I select this subcategory, I select the profit, and I select the sales. Now eventually client will come to you and they say, hey, I want to have a heat map across these fields. ठीक है, तो eventually आपने क्या किया, हमने वो सारा field select कर लिया. So these field, all your fields are your inputs, and now you see obviously your heat map is enabled. You simply click on this one and the heat map gets generated here. So just to give a better view, we give it an entire view. ठीक है, so now this heat map is enabled here. अब क्या होता है guys, मैं आपको जो बता रहा था कि whenever we create a heat map or any of these maps, so obviously अब अगर आप देखो, as I mentioned, this profit is being represented by your size. So this is obviously your size वाला icon. So if you see, this is size, and the sales value is getting represented by your color. अब मैं क्या बोल रहा था, ऑलवेज मेक अ नोट ऑफ इट कि जब भी आप कोई हीट मैप या कोई भी चार्ट बनाते हो, एनी ऑफ द चार्ट्स, एंड इफ यू आर यूजिंग अ मेजर, दिस मेजर इज हैव व्हिच मेजर, दैट पर्टिकुलर मेजर इज हैविंग नेगेटिव वैल्यू. सो इवेंचुअली अगर हमने अब यहाँ पर अभी देखा कि प्रॉफिट इज अ फील्ड, प्रॉफिट में सो देयर आर सर्टेन सब कैटेगरीज व्हिच आर हैविंग द नेगेटिव वैल्यूज, व्हाइल विद रिस्पेक्ट टू योर सेल्स वैल्यू, हर एक का सेल्स जो था, ओके, सो हर एक का जो सेल्स था, सो दैट वाज पॉजिटिव ओनली जब हमने बार ग्राफ बनाया था, राइट. किसी का भी सेल्स जो है वो बिलो जीरो एक्सेस जीरो के नहीं है. मेनली ऑल योर प्रॉफिट वैल्यूज आर पॉजिटिव, सॉरी सेल्स वैल्यू आर पॉजिटिव, व्हाइल देयर आर सर्टेन सब कैटेगरीज जहां पर हमारी प्रॉफिट वैल्यू नेगेटिव है. सप्लाईज, बुक केसेस एंड टेबल. सो हम जब भी अब हीट मैप्स बनाते हैं या प्राइमरली कोई भी ग्राफ बनाएंगे जिसमें कि एक मेजर होगा जिसमें कि नेगेटिव वैल्यू है, so as a best practice always consider that particular measure onto your colors and not consider that measure onto your size, because जब आप size लेते हो तो ये देखो, this is obviously यहाँ पर tables का subcategory is having -17K, this one is having -K, and this one more subcategory would be having -K. ठीक है, but then this is not something which is very intuitive or easy to understand. ठीक है, ऐसा लग रहा है जैसे कि यहाँ पे प्रॉफिट भी जो है पॉजिटिव भी है, लेकिन इवेंचुअली अगर हम इसको कलर पे ले लेंगे ना, so this will get very easy to understand, and someone with a मतलब simply by having a look on it, he or she will understand कि okay यहाँ पे sales value बहुत ही कम है as compared to other, and size will get described basis your sales value. So just to summarize,
जब भी हम ऐसा कोई ग्राफ लेंगे जहाँ पर हमें कलर एंड साइज दोनों चीज को हम यूज करके हम मेजर्स को डिस्क्राइब कर रहे हैं, तो ऑलवेज टेक दैट पर्टिकुलर मेजर जिसमें कि नेगेटिव वैल्यू है ऑन टू दी कलर एंड डू नॉट कंसीडर दैट measure onto your size. अभी अपन क्या करेंगे, you will simply click here and you will say I choose color and you will take the sales and you will change it onto the size. So अब ये देखो